हम्म, ओके हाय वेलकम टू कॉम्पिटिटिव ट्रिपल बी। सो जो जो आ रहा है अभी हिंदी वाला जो भी है आप लोग सब लाइक करके चैट बॉक्स में आते चलो, हम लोग 50 रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो चैट बॉक्स में आते चलो आप लोग। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आंसर आ रहा है आप लोग। ठीक है, नरेश यादव वेलकम। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, शैना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे सो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे बाय 2025 विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू लीड द ग्लोबल 5G अडॉप्शन रेट अकॉर्डिंग टू ITU रिपोर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, यहाँ पे चाइना। ओके, सो यहाँ पे क्या है, चाइना प्रोजेक्टेड टू लीड adoption by 25 its extensive infrastructure investments। ओके, सो यहाँ पे हाय। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ इंडिया होस्ट द G20 समिट इन 2025 what is likely to be a key agenda item based on current trends। ओके, सो ये डेबिट restructuring for developing nations, space exploration, collaboration, digital economy and data privacy, fossil fuel subsidies। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का आंसर। सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का आंसर, जल्दी से बताओ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का। सो यहाँ पे होगा डिजिटल इकोनॉमी एंड डाटा प्राइवेसी। ओके, डिजिटल इकोनॉमी एंड डाटा प्राइवेसी बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स डिजिटल इश्यूज आर लाइकली टू डोमिनेट G20 एजेंडास। ओके, सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा आप लोगों का आंसर, सी हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, in 2025 which UN sustainable development goal is in India is India expected to prioritize the most। ओके, किसको दिया है यहाँ पे priority, climate action। India has been be emphasizing climate goals in line with global commitments। ओके, यहाँ पे किसके साथ हुआ, यहाँ पे SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के साथ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन है, इंडिया हैज बीन। सो यहाँ पे क्या है आंसर, आप लोग जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे आप लोग फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बाई 25 व्हाट मेजर चेंज इज एंटिसिपेटेड इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, ए इंक्रीज्ड मिलिट्री अलायंसेस विद द EU, B focus on Quad partnership for security, withdrawal from SAARC, trade embargo with Asian countries। सो यहाँ पे क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखो आप लोग क्या आंसर है यहाँ पे, फटाफट जो लिखो यहाँ पे आंसर क्या है आप लोगों का। सो यहाँ पे क्या है आंसर, जल्दी से बताओ आप लोग। जो आ रहे हैं लाइक करके चैट बॉक्स में आते चलो। यहाँ पे देखो आंसर क्या है आप लोगों का, बी है, फोकस ऑन क्वाड पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी। ओके, सो इंडिया इंडो और पैसिफिक स्ट्रेटजी इज इवॉल्विंग विथ क्वाड अलायंसेस। ओके, सो यहाँ पे क्वाड अलायंस के साथ हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे विच ग्लोबल इवेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 2025 that would influence India's economy। ओके, सो क्या है यहाँ पे, which global event is scheduled for 2025 that could influence India's economy। सो ये फीफा वर्ल्ड कप
बी वर्ल्ड एक्सपो, सी कोपो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, डी ओलंपिक गेम्स। यहाँ पे क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन का, आप लोग बताओ। यहाँ पे जल्दी से बताओ आप लोगों का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। यहाँ पे है कोपो 30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ओके, सो यहाँ पे फिफ्थ का क्या होगा आप लोगों का, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इवेंट इज शेड्यूल्ड एंड कुड इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिसीज। ओके, यहाँ पे ग्लोबल पॉलिसीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में आओ। इन 2025 इंडिया इज प्रोजेक्टेड। सो साथ में आंसर देते रहो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे इन इंडिया 2025 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू अचीव व्हाट माइलस्टोन इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन 2025 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू अचीव व्हाट माइलस्टोन इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। कौन सा माइलस्टोन है वो, यहाँ पे जल्दी बताओ। यहाँ पे कौन सा माइलस्टोन है आप लोग रीच कर रहे हैं। यहाँ पे 500 गीगावाट। ओके, टोटल कैपेसिटी इंडिया एम्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 विथ। यहाँ पे प्रोग्रेस 2025 से यहाँ पे क्या करना है 2025 तक। ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सेवंथ क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सेवंथ क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे सिक्स्थ का आंसर दे दो आप लोग फटाफट। यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन में आ जाओ। व्हाट इज लाइकली फोकस ऑफ इंडिया 2025 बजट बेस्ड ऑन करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ओके, so what is likely focus of India's 2025 budget based on current economic trends? Okay, so यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम rollout, सी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, सब्सिडी रिडक्शन इन एग्रीकल्चर। सो 2025 बजट में क्या है, करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोगों को, 2025 बजट में किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, सो आप लोग बताओ सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का। यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताओ। जो जो आ रहा है लाइक करो दोस्तों, चार्ट बॉक्स में आते चलो। यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। एट क्वेश्चन में देखो। यहाँ पे एट क्वेश्चन में आओ। बाय 25 विच टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग जल्दी से बता, जो जो लाइक में आ रहे हैं लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते चलो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नरेश आंसर भी साथ साथ में देते रहना आप लोग। ठीक है, सो जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते चलो। यहाँ पे सो बाय 25 विच टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। यहाँ पे ये है ब्लॉकचेन फॉर फाइनेंस, बी एआई एंड मशीन लर्निंग, सी क्वांटम कंप्यूटिंग, डी वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस। क्या है यहाँ पे आंसर बताओ यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे आंसर क्या, अभी क्या चल रहा है, ये मॉडल चल रहा है सब, एआई एंड मशीन लर्निंग। ओके, सो ये रैपिडली ग्रोइंग इन इंडिया स्टार्टअप सीन। यहाँ पे अभी क्या है, रैपिडली ग्रोइंग ऑन एआई एंड मशीन लर्निंग। आप लोग आंसर देते रहो। ठीक है, सो नरेश, प्रीति, जितना भी आप लोग है सब लोग फटाफट आंसर देते रहो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन 2025
यहाँ पे in 2025 what demographic shift is projected to impact India's workforce? Okay, so A, agni population increase, B, youth unemployment rise, C, parity in employments, D, rural to urban migration peak. सो इकड़े यहाँ पे क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ आप लोग। यहाँ पे 8th क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे क्या होगा आप लोग जल्दी से बताओ। यहाँ पे होगा स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स। ओके, so youth and in 2025 what demographic shift projected impact India's workforce? यहाँ पे जल्दी से बताओ आप लोग आंसर क्या है, जल्दी से करेक्ट आंसर है आप लोग जल्दी से दो। यहाँ पे क्या होगा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा यहाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, 10th क्वेश्चन में विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज इंडिया लाइकली टू ratify by 2025 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पे 10th क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग। 10th क्वेश्चन में जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते चलो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इज इंडिया लाइकली टू ratify by 2025 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे आंसर बताओ। ए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, बी, पेरिस अग्रीमेंट एक्सटेंशंस, सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपडेट्स, डी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोगों का। यहाँ पे क्या है, विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट लाइकली रेटिफाइड 2025 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, यहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इंडिया लाइकली रेटिफाइड पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 11 से 20 क्वेश्चन है फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में। आप लोग जो जो आ रहे हैं लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बाय 2025 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज रिटेल पेमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी डिजिटल एज पर आरबीआई प्रोजेक्शंस। 50%, 70%, 90%, 100%। कितना परसेंट है यहाँ पे 2025 में इंडियाज रिटेल पेमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी डिजिटल एज पर आरबीआई प्रोजेक्शन। ओके, कितना परसेंट है यहाँ पे। आरबीआई प्रोजेक्शन इंडिकेट्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टू डिजिटल पेमेंट्स के लिए 25 में कितना परसेंट किया है, यहाँ पे 70% है। ओके, सो आप लोगों का आंसर क्या होगा 11th क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, 70% हो जाएगा, ठीक है। सो जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में जल्दी से आ जाओ, ठीक है। आप लोग जो जो आ रहा है लाइक करके 12th क्वेश्चन में आओ। इन 2025 दी आरबीआई इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस regulations for which emerging financial technology। ओके, यहाँ पे emerging 12th क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 25 आरबीआई इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस regulations for which emerging financial technology? A, cryptocurrency trading, B, open banking APIs, C, peer-to-peer lending platforms, D, micro ATMs in rural areas। ओके, माइक्रो ATMs in rural areas की कौन सा है यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे ओपन बैंकिंग APIs। ओके, यहाँ पे क्या है, ओपन बैंकिंग APIs। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का 12th का क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आप लोगों का आंसर क्या होगा आप लोगों का 12th क्वेश्चन का बी हो जाएगा। दिस इज ग्रोइंग ट्रेंड सिक्योर डाटा शेयरिंग इन बैंकिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। व्हाट कुड बी की चैलेंज फॉर इंडियाज बैंक 2025 ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। यहाँ पे 13th क्वेश्चन का क्या होगा आप लोगों का, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेडिंग ट्रेंड्स। सो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम एआई हैक्स। ओके,
यहाँ पे एक्स ड्राइवन थ्रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, किसी को ओटीपी शेयर नहीं करना, ऐसे सब लोग कोई भी ओटीपी शेयर कर रहा है आजकल, ठीक है। कौन लोग आप लोगों को पटा रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। सो ये काम नहीं करना, साइबर क्राइम में बहुत काम आता है, ठीक है आपको। सो साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा 13th क्वेश्चन का, आप लोगों का बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। सो साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। कोई भी लिंक सेंड कर देगा, आप लोग उसको नहीं कर देना, ठीक है। सो साइबर क्राइम का यहाँ पे मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कोई भी लिंक करता है तो ओटीपी नहीं बता देना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में आओ, बाय 25 विच बैंक इज प्रोजेक्टेड टू लीड इंडिया डिजिटल पेमेंट मार्केट, ओके। कौन सा बैंक है यहाँ पे लीडिंग इन डिजिटल पेमेंट्स बेस्ड ऑन करंट मार्केट शेयर। यहाँ पे शेयर के मुताबिक कौन सा बैंक है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। एसबीआई का है डिजिटल पेमेंट में सबसे, यहाँ पे एसबीआई का चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या है, आप लोग जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में आते चलो। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 15th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, इन 25 इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज फोरकास्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय। सो किसमें इन्फ्लुएंस का मोस्ट बाय हो, एक्सपोर्ट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसमें किया है यहाँ पे, सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन में, ठीक है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन में किया, सर्विसेज आर मेजर ड्राइवर फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 16th क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे 16th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट न्यू पॉलिसी माइट द आरबीआई इम्प्लीमेंट बाय 2025 फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। व्हाट न्यू पॉलिसी माइट द आरबीआई इम्प्लीमेंट बाय 2025 फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। A mandatory digital wallets for all citizens. B interest free loans for women entrepreneurs. C universal credit scoring system. D branch expansion in urban areas. So यहाँ पे क्या है आंसर, आप लोग जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या है। मैंडेटरी डिजिटल वैलेट फॉर ऑल सिटीजन, ओके। दिस प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 16th क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का आंसर जल्दी से बताओ, जो जो आ रहा है लाइक करो दोस्तों। यहाँ पे जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में आने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, 17th क्वेश्चन में आओ यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे 17th क्वेश्चन देखो, बाय 25 विच ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सिनेरियो कुड अफेक्ट इंडिया, ओके। ए यूएस डॉलर डिप्रिसिएशन, बी यूरोजोन debit default, C supply chain disruptions from conflicts, D inflation due to energy price hikes, okay। सो आप लोगों का आंसर क्या है यहाँ पे 17th क्वेश्चन का, जल्दी बताओ। यहाँ पे आंसर क्या है आप लोगों का, जल्दी बताओ। 17th क्वेश्चन, ग्लोबल करेंसी फ्लक्चुएशन कुड अफेक्ट इंडिया, यूएस डॉलर डिप्रिसिएशन, ओके। सो यहाँ पे क्या है, यूएस डॉलर डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 17th क्वेश्चन का क्या है, आप लोगों का आंसर ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 18th क्वेश्चन में, इन 25 व्हाट रोल इज ये एक्सपेक्टेड टू प्ले इन बैंकिंग ऑपरेशन, ओके। सो यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशन में क्या प्ले रोल कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड टू प्ले इन बैंकिंग ऑपरेशन, ओके। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, बी फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम, सी पर्सनलाइज्ड लोन अप्रूवल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे अब सब पॉजिटिव का है। यहाँ पे आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, नेक्स्ट फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम सब करना है, फ्रॉड डिटेक्शन का, पर्सनलाइज्ड लोन अप्रूवल्स भी सब ये एक है। सो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है 18th क्वेश्चन का। यहाँ पे 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग, जो जो आ रहा है लाइक करके चार्ट बॉक्स में। यहाँ पे 18th क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे 19th में देखो, विच सेक्टर इज लाइकली टू रिसीव द लार्जेस्ट पीएलआई एलोकेशन इन इंडिया 2025 बजट, ओके। यहाँ पे क्या पूछ रहे, पीएलआई का पूछ रहे हैं। यहाँ पे पीएलआई का हम लोग पहले भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैरास्यूटिकल्स, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल्स। यहाँ पे किसमें है पीएलआई एलोकेशन इन इंडिया 2025 बजट, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है। पीएलआई स्कीम्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल सेक्टर्स, ओके। यहाँ पे 20 क्वेश्चन में आओ, बाय
By 25, what change is anticipated in India foreign exchange reserves? Okay. A, significant increase due to exports. B, decrease from import demands. C, stabilization through digital currency. D, volatility from global trade wars. So यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का आंसर जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या है, व्हाट चेंज इज एंटिसिपेटेड इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यू टू एक्सपोर्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20 का। ठीक है, इंडिया रिजर्व्स आर ग्रोइंग विथ एक्सपोर्ट बूस्ट, ठीक है, इसकी वजह से। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 टू 2030 इकोनॉमिक एंड पॉलिटी क्वेश्चंस। सो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन 25 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माइट इंडिया कंसीडर फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, सो ये लोअरिंग द वोटिंग एज टू 18, मैंडेटरी वोटर आईडी कार्ड्स, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, साइमल्टेनियस इलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप लोग बताओ। दिस इज रिफॉर्म इज अंडर डिस्कशन फॉर एफिशिएंसी। ओके, इंडिया कंसीडर फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का 21 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे 22 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसी इज इंडिया लाइकली टू अडॉप्ट बाय 2025 टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, यहाँ पे 22 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया लाइकली टू अडॉप्ट बाय 2025 टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ए, मेक इन इंडिया 2.0। बी, आत्मनिर्भर भारत एक्सपेंशन। सी, फ्री ट्रेड जोन्स। डी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताओ। आप लोगों को सबको पता है यहाँ पे आंसर क्या है, मेक इन इंडिया 2.0। सो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट इज ए कंटिन्यूइंग पॉलिसिंग फोकस ऑफ अडॉप्टेड बाय 2025 बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो आंसर इज मेकिंग इंडिया 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23rd क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे बाय 25 व्हाट कुड बी ए मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, इन इंडिया, न्यू कोalition गवर्नमेंट formation. B, statehood for union territories. C, electoral bond reforms. D, पंचायत राज एक्ट अपडेट्स। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का आंसर जल्दी से बताओ। यहाँ पे जल्दी से बताओ। पॉलिटिकल शिफ्ट कुड अकर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू कोalition गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में हो, इन 25 इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट एज पर आरबीआई माइट बी। यहाँ पे कितना टारगेट किया है, यहाँ पे इन 25 इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट एज पर आरबीआई माइट बी 4%। ओके, यहाँ पे टारगेट कितना किया, आरबीआई टारगेट स्टेबल इंफॉर्मेशन इन्फ्लेशन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी 4%। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर 4%। ओके, so next question 25th question, which sector is projected to drive India's export growth by 2025? So which sector is projected drive India's export growth by 2025? IT services। okay, answer क्या है, IT exports are key growth area। okay, IT exports are key growth area। next question 26th question by 25, what change is expected in India's tax structure? okay, so 26th question by 25, what a change is expected in India's tax structure? A, GST rate reduction. B, introduction of wealth tax. C, digital transaction incentives, corporate tax hike। 26th question answer is GST rate reduction। okay, so it is tax reforms aim to ease burdens। okay, so answer is GST rate reduction। okay, reduction। so 27th question आ जाओ यहाँ पे, in 25 which global trade deal could India join? okay, यहाँ पे 27th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है 27th क्वेश्चन में, आप लोग जो जो आ रहे लाइक करो। यहाँ पे देखो, इन 25 विच ग्लोबल ट्रेड डील कुड इंडिया जॉइन? RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, comprehensive B, comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership,
सी EU इंडिया FTA, डी ब्रिक्स ट्रेड पैक्ट। यहाँ पे आंसर क्या है? EU इंडिया FTA negotiations are ongoing for this deal. So EU India FTA global trade deal. Okay. So next question में आओ 28th question. What demographic dividend is India expected to leverage by 2025? 28th question में आओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स, सीनियर सिटीजन पार्टिसिपेशन, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन इन स्टेम फील्ड्स। यहाँ पे क्या है? आप लोगों का आंसर क्या है? यहाँ पे स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स। ओके, यहाँ पे आंसर क्या है आप लोगों का? स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स। दिस इज सेंट्रल टू इंडियाज डेमोग्राफिक एडवांटेज। इंडिया एक्सपेक्टेड टू लिवरेज बाय 25 स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। 29 question by 25, which policy might address urban migration in India? 29 question by 25, which policy might address urban migration in India? A. Smart city initiatives, B. Rural development schemes, C. Job reservation in cities, transport infrastructure project. What answer? Tell me. So यहाँ पे 29 question का क्या होगा आप लोगों का आंसर? Policies and address migrations through rural focus is rural development schemes. Okay, so rural development schemes. Next 30 question in 25, India's role in the WTO could focus on. Okay, WTO focus on WTO discussion after center and subsidies. Okay, so किसमें डिस्कस किया है यहाँ पे? सब्सिडी रिफॉर्म्स। ओके, so India's role in the WTO would focus on subsidy reforms. 31 to 40 question is science and technology and environmental. So next question 31 question number. Okay, so 31 question number by 2025, what advancement is expected in India's space program? Okay, India's space program. So answer is what? ISRO plans including this milestone: manned mission to the moon, Mars orbiter launch, satellite consultation for 5G International Space Station partnership. So ISRO plans include this milestone for to the moon, manned mission to the moon. Answer. Okay. So option number A, manned mission to the moon. Answer. Next question number 32 in 25, which environmental issue is likely to dominate global discussion? Okay, so 32 question number in 25, which environmental issues is likely to dominate global discussion? So answer what यहाँ पे? So यहाँ पे deforestation in the Amazon, ocean plastic pollution, biodiversity loss in the Himalayas, carbon neutrality targets. What is the answer? So ocean plastic pollution. So this is rising global environmental concern. Okay, so environmental concern, ocean plastic pollution is your answer. Okay, 32 33 question, what AI application is projected for widespread use in India by 2025? 33 question number. Okay, what is healthcare diagnostics, autonomous vehicles, smart agriculture, all of the above? What is answer? AI applications are multifaceted. Okay, in India. So what answer is? All of the above. Okay, so क्या होगा यहाँ पे आंसर 33 का? All of the above. Next 34 में चलो यहाँ पे। By 25, India's electric vehicle adoption rate might reach. India's electric vehicle adoption rate might reach. This is important question. EV adoption is accelerating with government push. 30% of total vehicles. Okay, 30% of total vehicles. Next question, 35th question. In 25, which technology could revolutionize Indian agriculture? Okay, so in 25, which technology could revolutionize Indian agriculture? So drone farming, precision irrigation system, AI based crop production, vertical farming. So what is the answer?
Main technology is drone farming. Okay. So drone farming technology is transforming agriculture. Okay. Next question 36. What is a projected challenge for India's healthcare by 2025? Antibiotic resistance, telemedicine expansions, vaccine shortage, universal health coverage. India's healthcare by project. What? This is a growing health challenge. Antibiotic resistance. Okay. Antibiotic resistance. Okay. Next question 37. By 2025, which renewable energy source is India likely to invest in most? Solar, wind, hydro, geothermal. So what is the answer? Solar. Solar is the fastest growing renewable source of India. So what is the answer? Solar. Next question, 38th question. In 25, what cyber threat is expected to rise in India? 38th question. 38th question, in 25, what cyber threat is expected to rise in India? So answer. Ransomware attacks, phishing scams, data breaches in Finch, all of the above. Cyber threats are multifaceted. Okay. सो एक से नहीं होगा, यहाँ पे सारे होगा. आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबव होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग. 39th क्वेश्चन. विच मिशन इज इंडिया प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बाय 2025? GIS based climatic tracking, ocean cleanup initiative, forest carbon sequestration, or air quality satellites. So what is your answer? Based climate tracking, India is investing in monitoring technologies. GIS based climate tracking. Okay. So answer is A, 39th. 40 question by 25. What biotech innovation could impact India? So gene edited crops, personalized medicine, stem cell therapies, vaccine development. What is your answer? Biotech innovations are key for food security. Okay. So gene edited crops. Okay. So answer is gene edited crops. 41 to 50 question number. So sports and award and others. Okay. Sports and awards and others. 41 question is India's 2025. Which sports is India likely to excel in at the Asian Games? Okay. So 41 question number A is cricket, hockey, athletics, badminton. Which one answer? So answer is hockey. India has a strong tradition in the sport of hockey. So answer is hockey. So next 42 question number. Okay. 42 question number by 25. What award might an Indian scientist win for space contribution? By 25, what award might an Indian scientist win for space contribution? A. Nobel Prize in Physics. B. Fields Medal. C. Turing Award. D. None of the above. Nobel Prize in Physics. Okay. So 42 question answer. India scientist could be recognized for space work for Nobel Prize in Physics is your answer. Next 43 question number. 43 question numbers. 43. In 25, which cultural festival could gain global recognition in India? Global recognition in India. Diwali as a UN holiday cultural promotion is ongoing. So answer is Diwali as a UN holiday. 44 question number. What social issue is projected? What social issue is projected to be addressed in India's 2025 policies? A. Digital divide, gender equality in workplaces, rural education access, all of the above. So answer is social issues are interconnected in policy. So answer is all of the above.
Okay, so next question. Question number 45. By 25, which Indian city might host a major international summit? Which Indian city might host a major international summit? Answer: as the capital, it is a common host for summit. So capital is Delhi. Answer is Delhi. Okay. So next question 46. In 25, what literacy trend could emerge in India? So environmental themes are rising in literature. Okay. So answer is climate fiction. Okay. Climate fiction. Next 47th question. Which Olympic event 2024 might influence India's sports in 2025? So archery medals, wrestling controversies, boxing finals, all of the above. Which one is answer? India's performance influence future sports archery medals. Okay. So next question 48. By 25, what change is expected in India's education policy? Education policy. National education policy implementation, online learning mandates, skill based curriculum, the international university collaborations. Which one is answer? Based curriculum, education policies emphasis on skills. Okay, so skill based curriculum. Okay, so next education policy याद रखना है यहाँ पे. Next to 25, which entertainment trend could dominate India? OTT platforms with regional content, virtual reality films, live streaming events, Bollywood Hollywood mergers. OTT प्लेटफॉर्म ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं यहाँ पे विथ रीजनल कंटेंट. सो आंसर इज ए. So next, what demographic trend might shape India's policies by 2025? So this is trend shape policy priorities. If you need more details, variations or questions on specific topic, so answer is your urbanization growth. 50 questions completed rapid fire. सो अभी तक जो लाइव देखा उन सबको थैंक्स टू ऑल. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों. ठीक है. सो अभी लाइव के बाद जो देखेगा उनको भी सबको थैंक्स टू ऑल. ओके. सो सब लोग लाइव में आने की कोशिश करो. डेली 8:30 PM हम लोग बैंकिंग का जितना भी मेंस का डेली प्रैक्टिस करेंगे. आप लोग आएगा तो और क्वेश्चन बढ़ाएंगे, रिपीटेड करेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आएगा वो इधर नहीं होगा. ठीक है. अभी से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. ठीक है. सो अपना चैनल नेम है कॉम्पिटिटिव ट्रिपल वी. आपको काम नहीं आएगा तो अगले को शेयर करते रहो जो ग्रेजुएशन करके बैठा है, जो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, किसी में भी अप्लाई किया हो, अपना चैनल काम आएगा. सबको कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब आराम से देख सकते हैं. अपना कभी भी प्लेलिस्ट में भी रहेगा अपना वीडियोस, लाइव में पूरा रहेगा वीडियोस. सो जो देखना चाहता है आप लोग सारे देखो, एंजॉय करो. ओके. थैंक्स टू ऑल. डेली मिलेंगे हम लोग सुबह मॉर्निंग. तेलुगु वाला के लिए अपना 7 AM तेलुगु में स्पीड मैथ्स. उसके बाद अभी मेंस का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करके अपना वीडियो में अपलोड करेंगे डेली. सो आप लोग मेंस जितना हो सकता है क्लियर करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करूंगा. जितना भी इस चैनल में जुड़ेगा पक्का 100% आप लोगों का मेंस क्लियर हो जाएगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ. ठीक है. ओके. थैंक्स टू ऑल. ओके बाय दोस्तों. ठीक है.